वेलकम टू फ्यूजन क्लासेस। तो आज हमें काना पढ़ले आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ी दिना पिले आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पाखापाखि समान जेंटा लास्ट क्लास में डिस्कशन करथिना आइए का डिस्कशन करमा सेरा पाखापाखि समान। देखो तो डेफिनेशन काना होछि देखो आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग ईएमएफ का डेफिनेशन काना कहउछि अब देखो डिस्कशन करमा कहला इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी ईएमएफ व्हिच would generate same amount of heat as it generated by alternating EMF in the same circuit for the full time period। तो देखो पहले पहला डेफिनेशन को मैं पार्ट पार्ट कर दियो छे फॉर द फुल टाइम पीरियड जगह रहबा ना फुल तब क्या बोला इट जनरेट बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ। It is defined as the value of steady EMF which would generate same amount of heat as it generated by alternating EMF in the same circuit for the full time period। तो इधर अर्थ काना बोलछे पहला गुटे सर्किट नेमा सना काना करबा अल्टरनेटिंग ईएमएफ पास करबा। तो ई जगह रे जेते हीट प्रोड्यूस हेबा माने करा जो से हीट है ना एचएससी तो सही सेम सर्किट के नेमा पिले तो से जगह रे काना करबा डीसी सोर्स डीसी ईएमएफ देबा तो से जगह रे भी काना पिले सेम हीट जनरेट हेबा तना ना एचडीसी। तो जेन ईएमएफ लगी ई हीट दुटा सेम हेबा से ईएमएफ के कहमा हमें RMS value of alternating EMF মনে করা যায় এটা নাম E। তো এটা বলবো আপনি E RMS বুঝলেন আপনি एसी सर्किट रे যেতে হিট জেনারেট হওয়া সেম যদি আমরা ডিসি সার্কিটে যদি সেম অ্যামাউন্ট অফ হিট জেনারেট করবা যে ইএমএফ এর ভ্যালু রে সেম অ্যামাউন্ট অফ হিট জেনারেট হওয়া সেই ইএমএফ কে বলবা পিলা আমি आरएमएस ভ্যালু অফ অল্টারনেটিং ইএমএফ বলবো। বুঝলেন আপনি এটা ডেরিভেশন লিখবা চলো देखो ये डेरिवेशन की जगह हमें क्या करना पहला गुड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लेना इन ए स्मॉल टाइम। तो क्या लेना पहला let ds be the small amount of heat in small time dt। तो क्या करना let ds be the small amount of heat in small time dt। तो क्या माना ds गुटे होचे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन स्मॉल टाइम dt। तो पहले हमें हीट रा इक्वेशन जानि छु काना से पहले h इक्वल टू i स्क्वायर rt। तो जेहेतु इना हम स्मॉल हीट नै छु काना लिखबो पहले dh इक्वल टू i स्क्वायर r dt। तो इना हम काना करछु rms वैल्यू करछु कोई बात नहीं। तो इना हम करबा i rms बुझा गए। नेक्स्ट काना करबा भी हमें dh i जाएगा में काना लिख परछु e बाय r क्रॉस स्क्वायर r dt। तो ना काना करबा dh इक्वल टू e स्क्वायर बाय r स्क्वायर r dt। r कैंसिल हो जाओगे तो e जगह में कहां लिख पड़ चुकी है e नॉट sin ओमेगा t।
तो काण करबे ds इक्वल टू e नॉट रो स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t dt बाय तो एबे काण dh करतो ना टोटल जीरो ले काण करबा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड तो ये काण करबा integrating on both sides तो कहां लिखना है हमें दूसरी साइड इंटीग्रेशन कर देना एका लिमिट के 0 टू s इनका लिमिट पे 0 टू t क्या लिखी फुल टाइम पीरियड लगेगा तो इधर इंटीग्रेशन करना है s e नॉट रो स्क्वायर बाय r कांस्टेंट वाला बाइंडिंग बोले आसबा तो इंटीग्रेशन करना है 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t dt तो देखो लास्ट क्लास में हम डिस्कस करना बिले sin स्क्वायर और हम इंटीग्रेशन करना है उसको एक फॉर्मूला यूज करछन काना यूज करछन बिले sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू माने बिले 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 तो ये फॉर्मूला पुट कर लगाना बिले h इक्वल टू e नॉट स्क्वायर बाय r 0 टू t 1 minus cos 2 omega t by 2 dt बुझिए आपने तो नेक्स्ट क्या करना आपने s equal to 2 constant अब हम को लेना e naught square by 2r integration dt minus integration cos 2 omega t dt तो कारण आपले u1 लेवल पे इंटीग्रेशन ला और cos 2 ओमेगा t लेवल पे इंटीग्रेशन होला तो एबे कारण आपले s इक्वल टू e नॉट स्क्वायर 2r dt इंटीग्रेशन कारण आपले t इजारे कारण आपले sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा लिमिट रहवा 0 टू t बुझिए आपले की तापर का काम आपले h equal to e naught square by 2r t minus 1 by 2 omega पंचायत बाबा तो ना वैल्यू पुट कर लगा आपले sin 2 omega t minus sin 0 ऊपर लिमिट पुट करना तो लोअर लिमिट पुट करना तापर हमें करना है जो बिले ओमेगा वाले कितने से बिले 2 पाई बाय t इनपुट कर ओमेगा का वैल्यू तो कहां पे है h equal to e naught square by 2r t minus 1 by 2 omega तब क्या करना है sin 2 into omega इनपुट करना ओमेगा का वैल्यू कैसे मिले 2 pi by t into t minus sin 0 डिग्री का वैल्यू कैसे 0 तो लिखवा 0 बुझिए आपने नेक्स्ट आना अगले मिनट का h equal to e naught square by 2r t minus 1 by 2 omega
तो ये कौन है ये t t कैंसिल लीजिए 2 ओमेगा 2 ओमेगा 2 2 into 2 ओमेगा से कितना सॉरी 2 into 2 पाई से कितना 4 पाई 4 पाई का वैल्यू कितना है 0 तो लगा करना है 0 minus 0 0 multiply into 1 by 2 pi कितने में 0 होगा तो कहां पे आएंगे h equal to e naught square t by 2 तो ये कहां लेकर आते ना पहले एसी सर्किट लगी तो ये कहां लेकर आते h ac equal to e naught square t by 2r डायग्राम में इक्वेशन 1 बुझला पहले तो एबे काना करना पहले हमें डीसी सर्किट ले करना और दुई इक्वेशन काना करना कंपैरिजन करना सो इक्वेशन 1 हमें काना करना पहले h ac equal to e naught square t by 2r এটা মানে আমরা ইকুয়েশন 1 तो एबे हमें काना करना पहले डीसी सर्किट ले करना तो काना करना पहले हमें let e RMS be the value of CDEMF. CDEMF, which would generate same amount of heat. Let ERMS be the value of steady EMF which would generate same amount of heat जे कि same amount of heat generate करसी એટલે કાના બના કે HDC equal to I RMS रो square up तेनो काना करा पे HDC equal to E RMS रो square by R square 30 R कैंसिल हो जाएगा तो कहां पे आएंगे HDC equal to E RMS रो square by R एलिमेंट को सुन तो कहां पे मिले डेफिनेशन और हिसाब है इक्वेशन 1 और 2 का कहां पे इक्वल तो लिखा हुआ as per definition equation 1 and equation 2 equal है तो कहां लिखा मिले HDC equal to HAC तो कहां लिखा मिले E RMS रो स्क्वायर R T equal to E naught रो स्क्वायर T by 2 R कैंसिल T T कैंसिल तो कहां मिले E RMS रो स्क्वायर इक्वल टू E naught रो स्क्वायर बाय 2 तो आपने कहां लगाओगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दो साइड में क्या करना स्क्वायर रूट करना तो E RMS रो स्क्वायर E naught रो स्क्वायर बाय 2 तो कहां मिले E RMS इक्वल टू E naught E naught by root 2 वैल्यू पुट कर देला पे कहां पे मिले
ERMS equal to 0.707 E naught যদি percentage লেখা লেখা লিখব আমি ERMS equal to 70.7% बुझला दिए एटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए देखो डेफिनेशन कहला जे गुटे एसी सर्किट और गुटे डीसी सर्किट हम कंपैरिजन करबा करि साला पर दुनु को वैल्यू जहां हवा हम लिखमा एसी सर्किट रे वाला H AC इक्वल टू E नॉट स्क्वायर T बाय 2 डीसी सर्किट रे वाला HDC इक्वल टू ERMS स्क्वायर बाय R इनटू T डेफिनेशन हिसाब से दुई इक्वेशन ता इक्वल सेनो हम ERMS का वैल्यू पाइबा ठीक है पिले लिखिनियो नेक्स्ट क्लास आउट ऑफ डिस्कशन करबा